Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business, and stock market news of the day. I'm Paul Thotham, and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताज़ा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर SP शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत। जी शुक्रिया, धन्यवाद। और अब कार्यक्रम की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। Finance Minister Nirmala Sitharaman unveils 102 lakh crore rupees worth of infra projects to be implemented in the next 5 years. Sensex and Nifty slump 0.7% on the last day of 2019, but surges 15% for the year. And government will try to issue expression of interest for Air India in the next few weeks, says Aviation Minister Hardeep Singh Puri. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 102 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की घोषणा की। ये परियोजनाएं अगले 5 वर्ष में पूरी की जाएंगी। वर्ष 2019 के अंतिम दिन सेंसेक्स और निफ्टी में 0.7% की गिरावट, लेकिन साल भर में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, सरकार अगले कुछ सप्ताह में एयर इंडिया के लिए रुचि पत्र जारी करने का प्रयास करेगी। Listeners, before we take this program forward, I'd like to make a small announcement. We would like to inform you that we have started a new program, Money Matters, based on financial literacy and inclusion. You may listen to this interactive program on our official YouTube channel and other digital platforms from 4:05 to 4:30 p.m. in the evening. Each show will have a particular topic. Tomorrow's topic is Pradhan Mantri Mudra Yojana. You may ask questions about savings, investments, loans and taxations, and please send in your queries on our email ID moneymatters.air@gmail.com. और अब कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। आज शेयर बाजार में आज इस साल का अंतिम कारोबारी सत्र रहा और अंतिम कारोबारी सत्र में प्रमुख सूचकांकों में आज गिरावट देखी गई। कमजोर वैश्विक संकेतों और वर्ष के अंत में छुट्टियों के कारण बाजार कमजोर रहा। अंतर्दिवसीय कारोबार में 423 अंक से अधिक की बढ़ोतरी के बाद बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 304 अंक गिरकर 0.7% की कमी के साथ 41,254 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.7% की कमी दर्ज करता हुआ 87 अंक नीचे 12,168 पर आ गया। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स अपने पूर्व स्तर के आसपास ही बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। Equity benchmark indices slumped on the last trading session of 2019 amid weak global cues and year-end holidays. After swinging over 423 points intraday, the Sensex at the Bombay Stock Exchange declined 304 points or 0.7% to end the year at 41,254. The Nifty at the National Stock Exchange lost 87 points or 0.7% to 12,168. In the broader market, outperforming the Sensex, the BSE mid-cap index ended flat, but the small-cap index rose 0.4%. Among the BSE sectoral indices, the BSE Power Index was the top gainer with a rise of 0.6%, the Realty Index advanced 0.5%, and the Metal Index was up 0.1%. Among losers, the BSE Energy Index slumped 1.2%, Telecom and Auto indices lost 0.9%, and the IT Index fell 6.6%. The Oil and Gas and FMCG indices dipped 0.4% each. The Consumer Durable Index shed 0.3%. The Healthcare and Capital Goods Index was down 0.2% each. In the Sensex pack, Tech Mahindra was the top loser, shedding 2.5%, followed by Bajaj Auto, RIL, Hero MotoCorp, IndusInd Bank, Mahindra & Mahindra, HDFC and TCS.
On the other hand, NTPC, Sun Pharma, ONGC, Power Grid and Ultratech Cement were among the gainers. And before we have a discussion with Dr. Sharma in our studios, let's go online to Rajiv Nakbal, who's a market expert and stocks analyst for today. Welcome to the program, Rajiv. Thanks, Paul. Rajiv, we'll open our discussion being the last day of 2019. We've seen the market shed some weight today, if I can put it that way. It isn't major, but if you could just tell us, why do you think this happened, even though it did not go down the magic 40,000 mark? Well, actually, if you look at, for last couple of days, market had been in a range-bound mood. On Thursday, we saw expiry of the December series contract, because of which some unwinding took place. Now the global markets are going to be closed for tomorrow. Most of the global markets are closed. So, and the volumes are very thin. So when in a very thin volume situation, what happens is that, if even there is a bit of selling, the price moves much strong, in a southward manner. So with the lack of buying, so these they kind of, if you look at broad range movement, lack of volumes, these moves don't indicate much. And we are sitting with, as far as index is concerned, if you look today, also it was index which was reflecting more pain rather than the market breadth. Market breadth was still okay, and the most of the mid cap and small caps were able to keep their head above water. So I don't think there was this decline in Nifty has any major significance as far as the medium term moves and the mood of the market is concerned. जी राजीव, और अगर बात करें तो ये अब साल खत्म होने को है और आज आखिरी कारोबारी सत्र रहा है शेयर बाजार का। तो पूरे साल भर की बात करें तो ये देखा गया कि बड़ी कंपनियों के शेयरों में ज़्यादा तेज़ी देखी गई, जबकि मझोली और छोटी पूंजी की जो कंपनियां हैं उनके शेयरों में इतनी तेज़ी नहीं देखी गई। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, इसके पीछे दो वजह। एक तो जो SIP फ्लोज आए हैं वो लार्जली इंडेक्स फंड्स में आए या लार्ज कैप फंड्स में आए। तो पर फोर्स जो है फंड मैनेजर को उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जिसके फंड जो कैटेगरी में वो फंड उसमें स्कीम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके लार्ज कैप में आए तो पैसा ऑटोमेटिकली लार्ज कैप स्टॉक्स में ही जाएगा। और पिछली बार इसी साल नहीं, अगर आप देखेंगे इवन उससे पहले भी करीब ऑलमोस्ट जुलाई 2018 से जो लार्जली जो पैसा आ रहा है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में आ रहा है। यहाँ चाहे वो ऑफशोर ETF हो और या डोमेस्टिक SIP फ्लोज हो, तो उस वजह से एक डाइवर्जेंस हो गई है। दूसरा, ऑन फंडामेंटल बेसिस ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो जब थोड़ा सा मुश्किल समय होता है तो कंपनी विद अ लार्ज बैलेंस शीट साइज इज एबल टू इजीली वेदर दैट स्टॉर्म फॉर इफ देयर इज अ स्लो डाउन, तो वो ज्यादा आसानी से वेदर कर सकती हैं। लेकिन छोटी कंपनीज के मार्जिन पे प्रेशर जल्दी आता है। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे अर्निंग्स भी देखेंगे तो जो मिड और स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो थोड़ी प्रेशर में ज्यादा रही हैं, जिसकी वजह से उन स्टॉक्स में कोई खास किसी का रुझान नहीं रहा टुवर्ड्स बाइंग। दैट इज द रीजन ये डाइवर्जेंस आपने देखी है लार्ज और मिड कैप्स में स्टॉक्स में इन ईयर 2019। Rajiv, how would you like to sum up year 2019 and what are you looking up at 2020 and how do you see the market performing? Well, it was an year of, I would say, in a year of indices. I mean, Nifty and Sensex, and anybody who had exposure to ETF in these ETFs of Sensex and Nifty has earned reasonable return. But I think probably toward the second half of next year, we are going to see some kind of a change. I mean, I already see, if you look at the valuation, is not very expensive in the mid and small cap space. But the only thing which probably market or investors are waiting is that if there is an indication that the earnings recovery is going to happen. So if there is an first indications of earning recovery would probably push the prices of these stocks higher, mid and the small cap. So the divergence would stay. It's not that large caps are not going to get money because SIPs are going to continue. But I think the ratio in which the divergence happened in 2019 would gradually reduce, and towards the second half of the year, we might see mid and small cap stocks making a comeback. Some of them, I mean, where the quality of the management of the balance sheet is not an issue. So it's going to be again a very stock-specific year, very sector-specific year in which businesses where promoters are not doing any hanky-panky are going to get exponentially rewarded.
Okay, Rajiv, Finance Minister just a while back announced about 102 plus another 3 lakh crore worth of national infrastructure project impetus into that. How do you see that working for the industries across different sectors and especially for the small and mid cap? Well, see, if you look at some of the small and mid cap, there are after the boom of 2005 in infrastructure and real estate, there were a lot of companies which came in this specialized space. So again, in this case also, I think some of the companies which have the skill set of getting into specialized engineering project infrastructure would be able to get some business out of it. But again, large players who have large balance sheet size are the ones who are going to get bigger orders, because any government project comes with its own terms and condition, where probably having a capital and the balance sheet is one of the prerequisites for you to be a successful bidder and finally making money out of it. So I think there will be pockets in which some of the specialized engineering companies will do well in mid and small cap space. But in terms of large contracts, I think again it would be the big companies with a balance sheet which don't have much leverage actually would be the ones which would be able to get the maximum out of it. Rajiv, you've always said that look at the stocks, read the companies before and not the sectors. But I would like to ask you one last time this year that which are the sectors that you feel would be showing some green shoots or be showing positive results in coming 2020? From an investment perspective, I think some of the consumption stocks are going to make a comeback. Some of them which have corrected. As far as from a technical trading point of view, I think PSU banks is a space where probably we are going to see worst is over. Now the thing is when the good days are going to come back for the PSU space. So these are the two spaces where I am looking for, one for a long-term investment and one for a technical trade in which I make a reasonable amount of return on my trading capital. And if 5G is rolled out, telecom? No, I would stay out of it at least. Let the price war. See, there might be another round of price war. Let's see how many players stabilize. Let's see if the player who survive are able to increase the prices. And then there are always regulatory risks. I mean, these companies are kind of forced to continue to do capex. So I don't know when that is going to come into the bottom line. So I still would like to avoid that sector. That's the other places to try and make money out. जी राजीव, हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Coming back to the studios, and Dr. Sharma, we'd like to have your opinion on the last day performance of the stock market. Yes, I believe this is a usual correction because this is only a profit booking, I would say. Because going forward, we have a lot of positivities for the economy, and budget is approaching us. So markets will remain in a positive bias and will show a recovery very shortly. And I think there will be new highs in the coming times. Okay, there are lots more to discuss. जी हाँ, और ये जो अभी आने वाले वक्त में आप ऑटो सेक्टर के लिए कैसा देखते हैं कि क्या संभावनाएं अब बन रही हैं, नए साल अब जब लगेगा और जो सरकार ने जिस तरीके की अभी पॉलिसी लेकर के चल रही है, उसमें आपको क्या लगता है ऑटो सेक्टर फिर से तेजी पकड़ेगा? देखिए, डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है और डिमांड को वापस रिजुविनेट करने के लिए सरकार बहुत ही भरपूर प्रयत्न कर रही है और सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं. बहुत सारे जो जैसे लोन मेलाज कहेंगे रूरल एरियाज़ में सरकार ने चलाए हैं और क्रेडिट ग्रोथ के लिए सरकार ने बहुत प्रयत्न किए हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी रेट कट किए हैं और उनका ट्रांसमिशन भी अभी बैंक्स देख रहे हैं कि जैसे एसबीआई ने अपने लैंडिंग रेट्स कम किए हैं. तो आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि अगर डिमांड वापस रिजुविनेट हो जाती है, जो कि वापस एक अपटिक देखा गया है कुछ एरियाज़ में, जैसे डिमांड के ऊपर पहले जो प्रेशर था कि डिमांड रिजुविनेट नहीं हो रही है, तो डिमांड के लिए कुछ ग्रीन शूट्स आए हैं कि शायद ऑटो सेक्टर के लिए एक अच्छा समय आने वाला है. लेकिन यहाँ पे इस जंक्चर पे मैं ये बताऊँगा कि ऑटो सेक्टर को और ज़्यादा प्रफुल्लित करने के लिए शायद जीएसटी एक बहुत बड़ा हर्डल है. जीएसटी में थोड़ा रेट कट होना चाहिए.
तो हम समझते हैं कि 18% से ज़्यादा जीएसटी नहीं होना चाहिए, चाहे वो लग्जरी कार्स हों, और जो दूसरी जो स्मॉल कार्स हैं उनके ऊपर 12% से ज़्यादा जीएसटी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर जीएसटी में थोड़ा कटौती की जाती है, खासकर जो ऑटो सेक्टर है इसके लिए, तो हम समझते हैं कि इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और जो कंज्यूमर डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि प्राइसेस जब उनको थोड़ा कम रेट पे वस्तुएं मिलेंगी तो डिमांड वाकई ही वापस रिजिवनेट होगी। सरकार ने हाल ही में कारपोरेट टैक्स में कटौती का एक बड़ा बड़ा कदम उठाया था, तो जी। अब आप क्या सोचते हैं कि आपको लगता है कि क्या सरकार जीएसटी में और कमी करके, क्या सरकार के लिए संभव होगा कि जीएसटी में कुछ कमी करे वो दरों में? देखिए, ऐसा है कि जो रिफॉर्म्स हैं जी। वो सिंक्रेनाइज्ड होनी जी। चाहिए। अब जैसे सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की, एक बहुत ही भरपूर कटौती थी, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी जो एमएसएमईज हैं, करीबन कोई 97% एमएसएमई जो हैं प्रोप्राइटरी बिजनेस में हैं, जी। तो स्मॉल बिजनेसेस को उनका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। खासकर उनके लिए बिजनेस जो टैक्स कट है होना चाहिए, कम से कम जो एमएसएमई जो प्रोप्राइटरी बिजनेस में हैं, जो जिनके लिए ये कॉर्पोरेट टैक्स लागू नहीं होता है, उनको 5-7% का कटौती करके सरकार को उनको भी थोड़ा फैसिलिटेट करना चाहिए, जिससे कि उनका एक कॉन्फिडेंस बनेगा और उनके लिए जो उनकी रिस्पेक्टिव बिजनेसेस हैं उसमें कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के भी आगे संसाधन बनेंगे। Okay, let's take a holistic and roundup of the year that went past. Domestic benchmark indices rallied in 2019, but the year belonged to only the frontline companies, while the smaller stocks failed to attract investors' interest vis-a-vis their bigger peers. The benefits remained limited to a select group of big stocks as the small and mid-cap indices delivered negative returns for the second year in a row against nearly 15% gains clocked by the Sensex and Nifty. The Sensex surged over 5,000 points. The index also crossed the historic 40,000 mark. In another feat, the Sensex zoomed 1,921 points on September 20th, its biggest single-day jump in a decade after the government announced surprise reduction in corporate tax. Sensex touched 52-week low of 35,287 on February 19th, but later, with improved sentiment, it zoomed to its all-time high of 41,810 on December 20th. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index fell by nearly 3% this year, while losses were even sharper for the Small-Cap Index at about 7%. Small and mid-cap stocks had faced a rough ride last year also, as they slumped nearly 24%. The government in September took markets by surprise after it slashed corporate tax by almost 10 percentage points, the biggest reduction in almost 3 decades. This year's rally was driven by FPIs, who's invested mainly in large caps. FPIs invested $14.4 billion into the Indian equities. Between early February and the third week of September, Indian markets went into a serious correction phase, after which large caps recovered meaningfully on the back of FPI inflows. Barring January, July and August, FPIs have been net buyers in all months of 2019. और अब बात कर लेते हैं रुपए के प्रदर्शन की अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में। आज की अगर बात करें तो आज अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 5 पैसे कमजोर होकर 71 रुपए 36 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। वर्ष 2019 की अगर हम पूरी बात करें तो वहां पर अगर देखें तो रुपए में 2.3% का कुल मिलाकर अवमूल्यन हुआ है। और अब रुख कर लेते हैं एशियाई यूरोपीय बाजारों के आज के प्रदर्शन पर। अधिकतर एशियाई बाजार आज वर्षांत अवकाश के कारण बंद रहे, लेकिन चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.3% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। यूरोपीय बाजारों में आज कारोबार कमजोर रहा। वैश्विक मंदी की आशंकाएं कम होने और अमेरिका तथा चीन के व्यापार समझौते के नजदीक पहुंचने से बाजार में रिकॉर्ड तेजी के बाद निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग बनाए रखी। अंतर दिवसीय कारोबार में आज लंदन का FTSE 100 0.3% नीचे आ गया। फ्रांस के कैक में भी 0.2% की कमी दिखी गई। जर्मनी का डेक्स आज बंद रहा। And in the US markets slipped from record highs yesterday as investors booked profit from gains made this month after the US and China announced that they have reached a trade deal. So the Dow fell 183 points or 0.6% to 28,462. The S&P 500 lost 19 points or 0.6% to 3,221, and the Nasdaq Composite shed 61 points or 0.7% to 8,946. The three benchmark indices posted their biggest one-day percentage dip in about a month. White House trade advisor Peter Navarro said the US-China trade pact was likely to be signed in the next week, but that confirmation would come
from President Donald Trump or US Trade Representative Robert Lighthizer. A Chinese newspaper report said Chinese Vice Premier Li Hui would travel to Washington later this week to sign the deal. And before we take up discussions with Dr. Sharma, let me also give you a look on the oil sector. Crude oil prices fell on the final day of the year, heading for their biggest annual rise since 2016, supported by a thaw in the prolonged US-China trade dispute and OPEC supply cuts. Brent crude oil futures declined 15 cents to 66.52 a barrel. US crude was down 19 cents to $61.49 per barrel. Brent gained about 24 cents in 2019 and WTI rose 35%. The US is on track to become the net petroleum exporter on an annual basis for the first time in 2020, with output expected to rise by 930,000 barrels per day to a record 13.18 million barrels per day next year. Analysts expect growing US supplies to offset cuts by the OPEC in 2020 amid sluggish worldwide demand weighing on oil prices. Dr. Sharma, before we look at the gold market also, can you just tell us how do you think the oil market is going to look up in 2020? It's been pretty stable this whole year. Yeah. It will remain stable. I don't see any major uptick in the major upside in the oil prices, because now the growth is not that much lucrative. Growth is at around 3%, and if in the coming years growth becomes at around 3.5%, then I don't see that the crude oil prices will surpass $70. So I believe at this juncture we can see a rational figure at around 65 per barrel in the next on an average for the full year 2020. But then if China and US finally have some kind of an agreement and everything starts to fall in place, then do you think the next target will be oil prices because the demand will increase? Because if the US and China are able to settle their tussle, then that will take also some time to rejuvenate from the slowdown, because now China is also in the severe slowdown and the major Asian economies are not in a major up movement in the growth trajectory. So in the coming times, if the tussle between the US and China is settled and India is also starts growing in a good trajectory, then I believe the crude oil prices can consolidate at around $65. But if the growth is not coming majorly from the advanced economies or from the major economies and India and China, then the prices may again decelerate to the level of 55 or somewhere between 55 to 60. और अब बात कर लेते हैं दिल्ली सराफा बाजार की। तो दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 256 रुपये महंगा होकर 39,985 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। मजबूत वैश्विक संकेतों और खरीद बढ़ने से सोने के दाम में ही तेजी देखी गई। चांदी भी 494 रुपये की मजबूती से 48,313 रुपये प्रति किलो के स्तर पर जा पहुंची। डॉक्टर शर्मा, अगर यहाँ आपसे बात करना चाहें कि जानना चाहें कि सोना क्या अभी भी निवेश का एक आकर्षक विकल्प बना हुआ है? जी बिल्कुल। जब से मैं बताना चाहूँगा कि जब से लेमन क्राइसिस शुरू हुआ था और उसका जो आगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो उसका कंटेंजियन था, आई वुड से कंटेंजियन, वो स्प्रेड हुआ पहले यूरोप में, उसके बाद जापान में, फिर चाइना में और अब इंडिया में स्लो डाउन है। तो आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है वो एक के बाद एक रीजन में फ्रेजाइल रहती है। किसी ना किसी खिते में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, जिस वजह से डॉलर में कई बार अनयूजुअल मूवमेंट होते हैं। कई बार डॉलर अनयूजुअली अप्रिशिएट होता है, कई बार डेप्रिशिएट होता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आने वाले टाइम में यूएस में ग्रोथ कंसोलिडेट होती है, ग्रोथ यूएस आगे ग्रोथ लाने में सक्षम हो जाता है, तो सोने के भाव जो हैं वो स्थिर रह सकते हैं। लेकिन अगर यूएस को एक स्टिमुलस लेके आना पड़ा, जो कि जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यूएस जो फेड है आगे जो रेट टाइटनिंग उसका प्रोसेस है उसको उसमें थोड़ा स्लो डाउन में रहेगी, स्लो प्रोसेस में रहेगी, तो सोने के भाव और बढ़ सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि यूएस की आगे पॉलिसी एनवायरनमेंट कैसी रहती है। पर जिस तरीके से आगे इलेक्शन आ रहे हैं और जिस तरीके से यूएस को अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो मेरे को डॉलर में कुछ वीकनेस नज़र आती है आने वाले टाइम में, जो कि गोल्ड प्राइसेस के लिए बहुत अच्छी मूवमेंट देगी। Today, Finance Minister Nirmala Sitharaman today unveiled 102 lakh crore rupees infrastructure projects that will be implemented in the next 5 years as part of the government's spending push in the infrastructure sector. Releasing the report for the Task Force on the National Infrastructure Pipeline (NIP) for 2019-2025, Sitharaman said
A NIP task force has identified the projects of this amount after conducting 70 stakeholder consultations in a short period of 4 months after the Prime Minister Narendra Modi in his Independence Day speech spoke about investing 100 lakh crore rupees in infrastructure. Ms. Sitharaman said another 3 lakh crore rupees worth of projects are likely to be added to this pipeline. Ms. Sitharaman said the projects identified are in sectors including power, railways, urban, irrigation, education and health. She said nearly 25 lakh crore rupees energy projects have been lined up and another 20 lakh crore rupees in road and about 14 lakh crore rupees in railway projects have also been lined up. The finance minister said 102 lakh crore rupees in national infrastructure projects will help make India a $5 trillion economy by 2025. Dr. Sharma, I'd like to discuss this a little with you. There are different sectors in which they have allocated different funds. Now, but how do you see this 102 lakh plus another, let's say 105 lakhs, if we consolidate that, how do you see that pushing issues like demand, jobs, and general growth of a slowing down economy of 2019? I believe this is again a great breakthrough. We can say that 2019 was a year of great economic reforms. Historic reforms like cut in corporate tax and the other reforms, many reforms in the infrastructure segment for the MSMEs, for the social sector. Lot of things have been happened so far. So going forward, I think the next year would be the year of rebounding economic growth, facilitated by all these reforms which are undertaken by the government during the last, I would say, 3-4 months. So this move, infrastructure move, this is again great breakthrough. This will push the growth trajectory because infrastructure multiplier is very, very high in the developing economies like India. I think this is the step towards a $5 trillion economy. Now the government is very serious about the infrastructure development, and that will boost up not only the demand but also our competitiveness in the global markets. Because of the poor infrastructure, our manufacturers or our businesses are not able to sometime compete with the global peers. So at this juncture, I would say the implementation process becomes very, very crucial. There must be some project reviewing agency, some project reviewing committee which should analyze and review the projects only on the timely basis. Like I would suggest that there must be a monthly review of all the projects, because sometimes we face the stalled projects after a few months. So that should not happen. I believe if this 100 lakh crore plan which is now in place is implemented as soon as possible in the coming times, it will push the growth trajectory not only to the $5 trillion by 2024, but we can see a good growth trajectory leading to a $10 trillion economy by 2030. Okay, let's take a look at some other stories quickly. Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri today said that his ministry will try to issue expression of interest for Air India in the coming few weeks. Talking to media in New Delhi, Mr. Puri said Air India is a first-class airline, but privatization has to be done. And about the current account deficit for this year, the current account deficit narrowed to 0.9% of the GDP or $6.3 billion in July-September quarter of the first fiscal from 2.9% or $19 billion in the same period last year, according to RBI data. Coming to core sector output, contracting for the fourth consecutive month, the output of 8 core infrastructure industries shrank by 1.5% in November 2019 as 5 of the 8 sectors witnessed negative growth according to official data released today. The 8 core sectors had expanded by 3.3% in November 2018. जी, और चालू रबी सीज़न की बात भी कर लें तो चालू रबी मौसम में इस महीने की 27 तारीख तक देश में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 36 लाख हेक्टेयर अधिक ज़मीन में रबी की बुआई हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आज इस बात की जानकारी दी। And we look at some company performances. Engineering solution provider Thermax today said it has bagged 431 crore rupees order from a public-private joint venture power company for setting up 2 fuel gas desulfurization systems at their thermal power plant in Jharkhand. और लगता है हमारा समय अब
पूरा हो रहा है। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और शुक्रिया। अब चलते चलते एक नज़र आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Finance Minister Nirmala Sitharaman unveils 102 lakh crore rupees worth of infra projects to be implemented in 5 years. Sensex and Nifty slumped 0.57% on the last day of 2019, and the government will issue expression of interest for Air India. That's it in this edition of Market Mantra. Goodbye. नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज 102 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण किया। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों की कड़ी में इन परियोजनाओं को अगले 5 वर्ष में पूरा किया जाएगा। श्रीमती सीतारामन ने 2019 से 2025 के लिए राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन के लिए गठित कार्यबल की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात कही थी, जिसके बाद कार्यबल का गठन किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि कार्यबल ने संबंधित पक्षों से विचार विमर्श के बाद इन परियोजनाओं की पहचान की है। उन्होंने कहा कि बिजली, रेलवे, शहरी, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में इन परियोजनाओं की पहचान की गई है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि लगभग 25 लाख करोड़ रुपए की ऊर्जा परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। 20 लाख करोड़ रुपए की अन्य सड़क परियोजनाएं और 14 लाख करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं को भी इनमें शामिल किया गया है। केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में पहली और दूसरी तिमाही के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के परिणामों की घोषणा की। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर ने दोनों तिमाहियों में पहला स्थान हासिल किया। पहली तिमाही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को दूसरा तथा गुजरात के सूरत को तीसरा स्थान मिला है। दूसरी तिमाही में राजकोट दूसरे और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में झारखंड के जमशेदपुर ने दोनों तिमाहियों में पहला स्थान प्राप्त किया। नई दिल्ली नगर निगम और मध्य प्रदेश में खरगोन ने तिमाही की इस श्रेणी में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी की दूसरी तिमाही में महाराष्ट्र में चंद्रपुर और खरगोन को दूसरा तथा तीसरा स्थान मिला है। जनरल मनोज मुकुंद नरावणे आज देश के 28वें सेनाध्यक्ष बन गए। उन्होंने जनरल बिपिन रावत की जगह ली है। सेना प्रमुख का पदभार संभालने से पहले जनरल नरावणे उप सेनाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। अपने 37 वर्ष के कार्यकाल में जनरल नरावणे ने कई कमानों में सेवाएं दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति, फील्ड और अत्यधिक संवेदनशील उग्रवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लिया। जनरल नरावणे को जम्मू कश्मीर में अपनी बटालियन का प्रभावी नेतृत्व करने के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें नागालैंड में असम राइफल्स के महानिरीक्षक के रूप में सेवाओं के लिए विशिष्ट सेवा पदक भी मिला है। वे अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। पूर्व थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत ने अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान सेना के सभी रैंक के अधिकारियों और जवानों तथा उनके परिवारों को अपना पूरा सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया है। जनरल रावत लगभग 13 लाख भारतीय सैनिकों के प्रमुख थे। उन्होंने आज अपना पदभार छोड़ा। विदाई गार्ड ऑफ ऑनर के बाद मीडिया से बातचीत में जनरल रावत ने आशा व्यक्त की कि नए थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरावणे के नेतृत्व में सेना नई ऊंचाइयों को छुएगी। उन्होंने कहा कि जनरल नरावणे बहुत सक्षम और समर्थ अधिकारी हैं। मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सेना देश के सामने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जनरल रावत ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जनरल रावत को नवसृजित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सेना के तीनों अंगों से जुड़े सीडीएस के अंतर्गत साइबर और अंतरिक्ष से जुड़े संगठन और कमान काम करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पिक्सियन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसके समूह की कंपनियों के बैंक धोखाधड़ी मामले में 1 अरब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्तियों में इन कंपनियों के 2 वाणिज्यिक प्लॉट तथा मुंबई, चेन्नई, नोएडा और कोलकाता में स्थित 9 दुकानें भी शामिल हैं। एजेंसी ने सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र और प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की। सरकार ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की गतिविधियां तेज हुई हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उसी तरह से प्राथमिकता देगी जिस प्रकार से पूर्वोत्तर राज्यों को दी जा रही है।
केरल सरकार ने बाल यौन अपराध संरक्षण पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मुकदमों के लिए 28 नई फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में मंजूरी दे दी है और इस पर आने वाले खर्च की पहली किश्त जारी कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।